Mhm. हेलो हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? बैक अगेन इन द न्यू लाइव स्ट्रीम। हेलो हेलो। साउंड इज परफेक्ट, लेट मी चेक अगेन। एवरीथिंग गुड? या इट्स ओके, दैट्स गुड। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी। कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई एंड ऑल? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो अभी हम लोग चलते हैं असाइनमेंट नंबर, सॉरी, 10 का थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें कि है सैलरी रिप्लेस फॉर द टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सैलरीज हैं विच आर नॉट प्रॉपरली सेट। जस्ट अ मिनट। राइट, कुछ कुछ सैलरीज हैं जो कि प्रॉपरली सेट नहीं है हमारे इस टेबल में। तो अभी के लिए हम लोग रेगेक्स का यूज़ करते हैं। रेगेक्स दिस, इट वुड बी बेटर टू यूज़ दिस। अब हम लोग यहाँ पे इजीली देख पाएंगे कि क्या है क्या नहीं, एंड ऑल दो स्टफ्स। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेबल में है क्या, और क्या क्या चीज़ को हमें क्लियर आउट करना है यहाँ पे, मतलब क्या क्या चीज़ को हमें टेक केयर करना है। दिस इज ओके।
दिस इज ओके, बट अपने पास एक कॉमा है, सो वी हैव टू रिमूव दैट। यहाँ पे तो नंबर फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे अपने पास किस तरीके से है, यहाँ पर है क्या बोलते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर। यहाँ पर क्या है, दिस थिंग। यहाँ पर क्या है, ऑल ओके है, बट इसमें INR इंक्लूडेड है, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। इसमें क्या है, स्पेस, इस पे डॉट दिस, इस पे डॉट दिस, एंड दिस इज बैड डेटा, जो कि एक तरीके से ना न्यूमेरिक है ना टेक्स्ट है, इट इज़ लाइक मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हमें टेक केयर करना पड़ेगा, और हमें फाइनल आउटपुट, जैसे कि कोई भी डेटा सेट हो, सपोज इस तरीके से हो, या तो इस तरीके से हो, इस टाइप के डेटा सेट को हमें ठीक करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, या तो इस तरीके से भी हो, तो भी इसको हम लोग को ऐसे सेट करना पड़ेगा, मतलब कॉमा नहीं रहना चाहिए, कोई करेंसी नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, और नॉर्मल आउटपुट में आना चाहिए, जस्ट एक इंटीजर फॉर्मेट में। इट इज़ बेटर टू से डेसिमल फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, दैट्स द थिंग, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ का यूज़ करने वाला है, लेट अस चेक दैट आउट। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे सैलरी रॉ यूज़ करने वाला हूँ, और इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, अपने पास अभी क्या है, सैलरी रॉ फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, अब हम कुछ इस तरीके से क्लीनिंग करेंगे, जिसमें कि हमें सिर्फ नंबर्स ही चाहिए। नंबर्स इन व्हाट सेंस, नंबर्स इन सेंस ऑफ दिस, सपोज इस तरीके का फॉर्मेट हमें बस आउटपुट में चाहिए। राइट, इस तरीके का फॉर्मेट हमें सिर्फ आउटपुट में चाहिए। आई मीन टू से, अगर 20,000 INR रहे, और इस टाइप से रहे, या तो इस तरीके से रहे, वो सब चीज़ को एक पार्शियल क्लीनिंग करके हम सिर्फ इस तरीके का आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। सपोज यहाँ पे 0.10 हुआ तो भी ठीक है, आई मीन टू से ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। वी हैव टू रिप्लेस समथिंग। समथिंग मतलब कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ेगा। दिस थिंग, दिस थिंग, दिस ऑल थिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा, दैट्स इट। राइट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, तब जाके मैं आगे प्रोसीड करूँगा। राइट, तो चलो हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस के लिए क्या चाहिए, रेगेक्स पी रिप्लेस चाहिए होगा। ठीक है, रेगेक्स पी रिप्लेस का फॉर्मेट क्या लिखने का, यहाँ पे कॉलम नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट के कॉलम को हमें टेक केयर करना है।
वो लिखना पड़ेगा, राइट। किस तरीके का फॉर्मेट को हमें टेक केयर करना पड़ेगा, ठीक, वो सब हमें लिखना पड़ेगा। देन वी हैव टू गो एंड चेक दैट आउट। अभी के लिए हम देखते हैं यहाँ कैरेक्टर वेराइंग है, तो नंबर्स कैरेक्टर वेराइंग है, मतलब हम लोग ऐसे देंगे, इस तरीके से देंगे, ठीक। क्यों? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, रेगेक्स रिप्लेस यूज करो इस कॉलम पे जिसमें कि जो क्यों स्ट्रिंग फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर वेराइंग लिखा हुआ है, इसीलिए। सिंपल। अगर कैरेक्टर वेराइंग नहीं होता तो ये दोनों कॉमा हम लोग ऐड नहीं करते, और जहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट आता है वहाँ पे ये लगाना ज़रूरी है, विच इज़ कॉल्ड हैट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। दैट्स इट। और ये बॉक्स क्यों है, ये चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे, वाई दिस थिंग। अब क्या हो गया यार, यहाँ पे अब क्यों नहीं आ रहा है, पैटर्न सेटिंग नहीं, शीट शीट, बॉक्स, हाँ। देखो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, बॉक्स जो क्या है, एनी ऑफ ए बी और सी, ठीक है, दैट इज द बॉक्स। अब इसका मतलब क्या है, कैरेट का मतलब दिस वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एनीथिंग विच इज नॉट ए बी सी। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ जो मैंने यूज किया है दिस वन, इसका मतलब समझते हैं। अब हमने जब पहले क्वेश्चन किया था हमने इस तरीके से यूज किया था, फिर स्लैश डी, फिर इस तरीके से यूज किया था। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में इसका मतलब क्या है, स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर आप देखो, मैं सेम चीज बट मैं बॉक्स के अंदर यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉट ए बी सी। मतलब मैं सीक्वल को बोलूंगा जो भी कैरेक्टर 0 to 9 के बीच में ना हो, ठीक है, 0 to 9 के बीच में ना हो, उसको आप क्या करो, रिप्लेस कर दो विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे किस तरीके के डेटा सेट है, यहाँ पे इस तरीके के डेटा सेट्स हैं अभी अपने पास, ठीक, इस तरीके के डेटा सेट्स हैं, इस तरीके के डेटा सेट्स हैं जो कि 0 to 9 फॉर्मेट में नहीं है, इस तरीके के डेटा सेट्स हैं जो कि 0 to 9 फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। दैट इज अ थिंग। तो मैं अभी नॉर्मल क्लीनिंग करना वाला हूँ, ठीक है, नॉर्मल क्लीनिंग। नॉर्मल क्लीनिंग में क्या रहता है, यू विल बी जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द नंबर्स। अगर नंबर है देन गुड टू गो, अगर नंबर नहीं है, अगर नो नंबर, मतलब अगर नो नंबर, देन गिव एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब नो नंबर कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके से, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या, विच इज नॉट ए बी सी, ठीक है, विच इज नॉट ए बी और सी, ठीक। जो जो सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे देखो, जो जो भी इसमें सिलेक्ट हुआ है वो ए बी सी में नहीं आता है, राइट। दिस आर नॉट ए बी सी। यहाँ देखो कैप्चर में सी और ए हटा दिया है, क्यों, क्योंकि ए बी और सी में सी और ए आता है। ग्रुप्स में देखो क्या ए बी सी है, नहीं है, तो इट इज लाइक दैट।
अब यहाँ पे देखो, मैचेस अ ए कैरेक्टर केस सेंसिटिव, मैचेस बी कैरेक्टर, मैचेस सी कैरेक्टर। अब हमारा यहाँ काम क्या है, विच इज नॉट इक्वल टू द नंबर, हम लोग यहाँ पे वही रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग लिखेंगे रेगेक्स पी रिप्लेस, रेगेक्स पी रिप्लेस, फिर उसका जो फॉर्मेट है, कौन सा कॉलम का नाम, सैलरी रॉ, देन हम लोग यूज़ करेंगे 0 to 9, जो कि 0 to 9 में नहीं है, और इवन तो मैं ये भी बोलूँगा जो कि डॉट नहीं है, वो सारे चीज़ों को वो एक साथ लिखूंगा, एक साथ मतलब बॉक्स, बॉक्स ब्रैकेट आई मीन टू से, ठीक है। नहीं है उसको, मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग में चाहिए, और ग्लोबल फॉर्मेट में। अब ग्लोबल फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको शोकेस करता हूँ यहाँ पे। यहाँ शोकेस तो नहीं दिया है भाई। हाँ देखो, ग्लोबल सर्च, अगर यहाँ पे शोकेस करेगा, देखते हैं। यहाँ शोकेस नहीं करा। ग्लोबल सर्च का मतलब क्या है, रिटेन द इंडेक्स ऑफ लास्ट मैच अलाउइंग subsequent सर्च to start from the end of the previous match. Without the global flag, the subsequent searches will return the same match. ठीक है, that's the thing. regex only searches for a single match when the global flag is disabled to avoid infinite match error। ठीक है, हमें यहाँ ग्लोबल इसलिए देना पड़ेगा, द रीज़न इज कि वो स्टार्ट से लेके एंड तक जितना हमने डिटेल दिया तक उन्हीं तक ही उस डिटेल को सर्च करे और हमें आउटपुट दे। दैट्स द थिंग, ठीक है। आई होप यू गेट इट। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अब ग्लोबल सर्च तो हो गया, सिंपल एज काइंड ऑफ लिखते हैं, जस्ट क्लीन करके, जस्ट क्लीन करके लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कुछ आता है क्या। अब देखो इसमें क्या क्या डेटा आया हमारे पास, जो भी डेटा, जो भी डेटा में 0 to 9 नहीं है, सपोज 15, एक मिनट, मैं यहाँ पे शोकेस, सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे शोकेस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो आप देखो, यहाँ पे जो कॉमा है, कॉमा 0 to 9 या डॉट में आता है क्या, नहीं आता है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ देखो कॉमा को रिमूव कर दिया गया, ठीक है, सिंपल एज दैट। यहाँ INR देखो, क्या INR 0 to 9 और डॉट में आता है क्या, नहीं आता है। तो जो INR मतलब जो करेंसी यहाँ दिखा रहा है वो रिमूव कर दिया गया, बिकॉज वो रेगेक्स फॉर्मेट में नहीं आता है, ठीक है, नॉट इन रेगेक्स रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो ABC का देखो, ABC क्या आता है 0 to 9 और डॉट में, नहीं ऑब्वियसली नहीं आता, क्योंकि ABC एक अल्फ़ाबेट है और हमने नंबर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, और नंबर्स के रिक्वायरमेंट में अल्फ़ाबेट्स आर नॉट अलाउड। तो इसलिए अल्फ़ाबेट रिमूव हो गया और सिर्फ नंबर्स आ गया, और उनके जगह क्या हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट्स इट, सिंपल। यहाँ पे देखो ये स्पेस, स्पेस भी नहीं आता तो वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग में शोकेस कर गया। सो दैट्स द थिंग, करेक्ट। अब यहाँ पे हमने जैसे ही दिया हुआ है रेगेक्स में जो रिक्वायरमेंट दिया हुआ है वो रिक्वायरमेंट फॉलो अप हो रहा है, सिंपल, ठीक है। तो फिलहाल के लिए किसी को कुछ डाउट यहाँ पे,
अभी तक के लिए किसी को कुछ डाउट तो आप पूछ सकते हो इधर। किसी को कुछ भी डाउट हो अभी तक, टिल हियर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पार्शियल क्लीनिंग किया है, नॉर्मल क्लीनिंग हमने। देखो ये सारा चीज़ क्लीनिंग नहीं किया, 0.5 या तो दिस 1 2 3, ये सब चीज़ हमने क्लीनिंग नहीं किया, हमने सिर्फ पार्शियल क्लीनिंग किया हुआ है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, तो किसी को कुछ डाउट फिलहाल के लिए, टिल हियर, टिल हियर किसी को कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक। अगर डाउट नहीं है मैं आगे देन प्रोसीड करूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। किसी को कुछ भी डाउट फिलहाल के लिए तो प्लीज़ पूछो, मैं वेट करता हूँ, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आई विल वेट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो इस लाइव स्ट्रीम में। किसी को कुछ भी डाउट रिलेटेड टू दिस क्लीनिंग पार्ट वो भी चलेगा, क्लीनिंग पार्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या तो इससे अलग कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। तो किसी को कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ पूछिए। किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में प्लीज़ पूछो इन द लाइव स्ट्रीम। किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में जस्ट आस्क योर डाउट्स। Anybody have any doubts in the live stream? Just ask your doubts in the live stream. Okay, चलो, no issues. Let us move forward with the questions. फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है आप लोग पूछना, राइट। सिंपल। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए, अब हम किस तरीके का आउटपुट यहाँ शोकेस करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। वो हमें देखना है। अब हमने तो बता दिया कि चलो ये अपना आउटपुट रहेगा, जस्ट क्लीन करके मैं लिखूँ, कॉपी करता हूँ एंड देन लेट्स जस्ट पेस्ट इट। This is the output that we have received right now. So, is it the correct way? Kind of, kind of, kind of correct. But the thing is कि we have to make it more clear. We should make sure कि each and every numbers are in same format. ठीक है, are in same format, ठीक। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर this thing, ठीक, अगर ये जो फॉर्मेट जो हमने निकाला है स्टार्टिंग में, if this things is equal to 0 to 9, simple, 0 to 9, then I would say plus
क्योंकि 0 to 9 मतलब, एक मिनट बता रहा हूँ आपको। सपोज जैसे 47,000.00, if this is equal to, sorry, 47,000.00 मतलब विदाउट द कॉमा, इफ यू चेक दैट आउट, तो मैं वही बोल रहा हूँ, इफ दिस फॉर्मेट इज इक्वल टू 0 to 9, ठीक है, देन आफ्टर डॉट there can be any number, there can be any number from 0 to 9, आई मीन टू से ये तो 47,000.00 है, सपोज कहीं पे कुछ नंबर हो, एग्जांपल इज द आई थिंक, हाँ, 38,500, सपोज 38,500.80, if this is equal to 38,500.80, so is it matching right now? 38,500 तो यहाँ मैच हो जाएगा, 38,500, और यहाँ 0.80 मैच हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वॉट आई नीड, सिंपल, राइट। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और एक बात दिखा देता हूँ, इफ 0 to 9 which is actually equal to this, then dot 0 to 9, we have to find the output, simple, this is what we need। लेकिन इतने में नहीं होगा, मतलब दिस इज जस्ट आवर थॉट प्रोसेस, ठीक है, ये अपना क्या है, थॉट प्रोसेस है, ठीक है, विच इज करेक्ट, बट ये हमारा थॉट प्रोसेस, लाइक आवर थॉट प्रोसेस, और आई वुड से द ह्यूमन थॉट प्रोसेस जो है, टू मैच विथ द सीक्वल लैंग्वेज, हमें उस लैंग्वेज में उससे बात करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक श्योर सीक्वल अंडरस्टैंड our thought process। so how can we make sure कि SQL understand our thought process? We have to tell SQL in their own technical language, then how we will say it? Let's jump into this regex का website। यहाँ पे देखो, यहाँ पे we have already told, let me show you here only, कि यहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हमने किया और क्या मिस्टेक्स को नहीं क्रिएट करना है। I will write case when same thing, same thing, simple, सेम थिंग, इक्वल टू, और रेगेक्स में हम लोग इक्वल कैसे लिखते हैं, लाइक दिस, इक्वल टू, इट इज इन टेक्स्ट फॉर्मेट, इसीलिए इट इज इन टेक्स्ट फॉर्मेट, दैट्स व्हाई स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, कहाँ गया, स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग 0 to 9, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग 0 to 9, देन अ प्लस, वाई प्लस, लेट मी टेल यू हियर, if I write a plus, hmm, matches one, हाँ, matches one or more of the preceding token, like that, ठीक है। अब देखो ये जैसे बाई, बिलो, बार, ये क्या है, मतलब जो भी हमने दिया हुआ है, हमने 0 to 9 दिया हुआ है, राइट, तो आगे क्या करेगा वो, 0 to 9 जो है, जो भी नंबर्स है, हालांकि ये तो अल्फ़ाबेट है, बी इज एन अल्फ़ाबेट, सो यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट्स है, उसके आगे जितने भी टेक्स्ट होंगे या तो जितने भी डेटा होंगे, वो सब भी अल्फ़ाबेट ही मैच होने चाहिए, बट हालांकि हमारे पास तो अल्फ़ाबेट नहीं है, वी हैव नंबर्स,
So what we will write? We will write 0 to 9 प्लस, ठीक है, वी विल राइट 0 to 9 प्लस, ठीक, दैट्स द थिंग, मतलब 0 to 9 जो भी नंबर्स रहेंगे वो आगे मैचअप होते रहेंगे, दैट्स इट। अब प्लस देके मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आगे डॉट रहे, ठीक है, एंड डॉट का क्या रहेगा रूल, स्लैश डॉट, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, चीट शीट में देखते हैं। हाँ, सी स्लैश डॉट, स्लैश डॉट रहे, इसके बाद डॉट रहे, क्यों, क्योंकि नंबर्स के बाद इट इज लाइक दैट, जो आप लिखोगे 10,000, 10,000 के बाद एक डॉट रहेगा, तो इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ डॉट। एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटिंग अ डॉट। तो एक्चुअल डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बैक स्लैश और एक डॉट देना पड़ेगा। सो आई विल राइट प्लस, प्लस इन ब्रैकेट बैक स्लैश डॉट। अब ये ब्रैकेट के बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ शोकेस नहीं हो रहा है, ओके, okay. हाँ, ब्रैकेट इज व्हाट, capturing group, simple, let me delete this and let me show you what it is all about, ठीक, कैप्चरिंग अ ग्रुप। अगर आप ब्रैकेट के अंदर एच और ए लिखते हो, हालांकि इसमें तो एच और ए करके हमने लिखा हुआ है, अब मैं ब्रैकेट के अंदर अगर लिखूं सेम चीज, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखूं स्लैश डॉट, ठीक है, नंबर, तो रेगेक्स क्या करेगा, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करेगा, मतलब देखेगा जीरो, सॉरी डॉट के बाद क्या नंबर्स कुछ फॉलो हो रहे हैं, जैसे 01 02 10 28, एनी नंबर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 01 02, ऐसा नहीं है, एनी नंबर, बिकॉज हमने 0 to 9 दिया हुआ है, इट इज लाइक ओनली नंबर्स, एंड दैट टू एनी नंबर बिटवीन 0 to 9, सिंपल। तो हमने क्या बोला है, डॉट के बाद 0 to 9 कुछ भी हो बट इन अ ब्रैकेट, मतलब जैसे नंबर है 10,000, डॉट के बाद कुछ नंबर्स होने चाहिए, डॉट के बाद कुछ नंबर्स होने चाहिए यहाँ पे, दैट्स इट, नथिंग एल्स, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो हमने भी वही यहाँ पे शोकेस किया, नंबर्स, देन दिस 0 to 9, ठीक है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है सही। अगर नहीं आता है देन वी विल सी व्हाट इज द एरर, let me just check। यहाँ नहीं आ रहा, ओके, मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर ये सब फॉलो हो रहा है तो लेट्स गिव दिस थिंग, नहीं, यहाँ फॉलो अप नहीं हो रहा है, राइट। मैंने क्या लिखा है, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो अप हो रहे हैं, मतलब दिस थिंग्स आर गेटिंग फॉलो अप, इफ दिस थिंग्स आर गेटिंग फॉलो अप देन मुझे यही डेटा सेट क्लीन में चाहिए, नहीं तो नल में दे दो, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ इसको बोला है, बट दिस इज ओनली नॉट फॉलोइंग, ठीक, दिस डेटा सेट इज फॉलोइंग बट यहाँ पे डेटा सेट फॉलो अप नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देर इज सम एरर वी आर सीइंग। अब मैं क्या बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ लिखा है स्लैश डॉट 0 to 9, अगर मैं यहाँ लिखूँ
कुछ यहाँ शोकेस कर रहे हैं क्या? नहीं, शोकेस नहीं कर रहा है। Not even this. अब देखो, यहाँ पे हमें जो भी लिखा है, यहाँ पे जो भी रेगेक्स लिखा हुआ है, ये फॉलो अप नहीं हो रहा है। हमने यहाँ चेक किया, हमने क्या चेक किया, मतलब डॉट के बाद नंबर्स होने से चलेगा, बट क्या हमने बोला कि कितना नंबर्स होने से चलेगा? मतलब हमने तो रेगेक्स को ऐसे बोल दिया, डॉट 0 to 9। क्या हमने यहाँ बोला है कि रेगेक्स को कि डॉट के बाद कितने नंबर्स होने चाहिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स हैं, जैसे 10,000.0, 10,000.21। यहाँ देखोगे, यहाँ डॉट के बाद कितने नंबर्स हैं? एक। यहाँ देखोगे डॉट के बाद कितने नंबर्स हैं? दो। ठीक है, दैट्स द थिंग। अब जब यहाँ पे हमने रेगेक्स को बोला ही नहीं है कि भाई डॉट के बाद कितने भी नंबर्स हो वो आप फाइंड आउट करो, तो रेगेक्स वोंट बी एबल टू फाइंड आउट। इसीलिए हमें यहाँ पे एक प्लस साइन देना पड़ेगा, विच शोज, मतलब फॉर दिस फॉर्मेट, विच शोज लाइक डॉट के बाद 0 to 9 देन प्लस। इसका मतलब ये है कि रेगेक्स क्या करेगा, क्या फाइंड आउट करेगा कि जैसे भी फॉर्मेट हो, या तो इस तरीके का फॉर्मेट हो या तो इस तरीके का फॉर्मेट हो, दोनों फॉर्मेट को वो फाइंड आउट करके चेक करेगा। दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ प्लस साइन दिया है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस साइन? मीनिंग ऑफ प्लस साइन इज one or more of the same thing. See, matches a character one or more than the preceding token. That's it, nothing else. Right? जैसे यहाँ देखो, मैचेस ए, दैट्स इट। जहाँ पे ए मैच हो रहा है वो सारी चीज़ें आप शोकेस करो। और हमने कोई लिमिटेशंस नहीं दिए, हमने ग्लोबल नहीं दिया, हमने बोला अनलिमिटेड सर्चेस होगा चलेगा। ग्लोबल का मतलब क्या है? जहाँ पे डेटा कंप्लीट हो रहा है वहीं तक ही सर्च करो, दैट्स इट। बट हमने क्या बोला है यहाँ पे कि जहाँ तक हो सके फाइंड आउट द डेटा, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, हाँ, लेट्स सी, A to G, यहाँ पे कुछ शोकेस कर रहे हैं क्या? लेट्स सी, यहाँ पे 9 लिख के देखते हैं अगर कुछ शोकेस कर रहा होगा तो। ओके, यहाँ पे अभी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैचेस अ डॉट कैरेक्टर दिस, then matches the character in range 0 to 9, matches one or more of the preceding token। ठीक है, अब प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब इसमें जो राउंड ब्रैकेट है ये क्या शोकेस कर रहा है कि ग्रुप्स मल्टीपल टोकन टुगेदर एंड क्रिएट्स अ कैप्चर ग्रुप फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ सबस्ट्रिंग और अ बैक रेफरेंस। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा वो आप एक्सट्रैक्ट करके मुझे आउटपुट में दो। क्या क्या एक्सट्रैक्ट करने बोले हैं इसको? एक डॉट, डॉट कैरेक्टर, उसके बाद 0 to 9 में जो भी होगा चलेगा, एनी ऑफ द नंबर, देन प्लस, विच मीन्स मैचेस वन और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन। प्रीसीडिंग टोकन मतलब दिस, व्हाट इज द प्रीसीडिंग टोकन इन दिस? हियर नंबर्स आर द प्रीसीडिंग टोकन। ठीक है, हियर्स नंबर्स
आर द प्रीसीडिंग टोकन। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर्स आर द प्रीसीडिंग टोकन। सिंपल। ठीक है, सिंपल एज इट इज। हमने यहाँ पे भी प्लस दिया हुआ है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, हमने यहाँ क्या दिया हुआ है, 0 to 9 में कुछ भी चलेगा, फिर प्लस, राइट, दिस थिंग। मतलब 0 to 9 में कुछ भी हो चलेगा, वी डोंट हैव वरी अबाउट इट। अगर मैं उसको यहाँ पे भी लिखूँ, लेट्स राइट दैट 0 to 9 सिंपल, एंड इट इज इन टेक्स्ट फॉर्मेट, तो रहेगा इधर प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या शोकेस कर रहे हैं जो, एक वेट अ मिनट, यहाँ पे जो सिंगल कैरेक्टर मतलब जो स्ट्रिंग कोटेशन मार्क है, वो बोल रहा है कि मैच द स्ट्रिंग कोटेशन मार्क एंड मैच द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग इज फॉर हैट, मतलब कैरेट, आपको आइडिया है क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसीलिए दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, मैच अ कैरेक्टर इन द रेंज 0 to 9। ठीक है, then what is the use of this plus, match one or more of the preceding character, and what is the preceding character, 0 to 9। ठीक है, इट इज लाइक 0 to 9 को मैच करते रहो जब तक हो रहा है, मतलब जब तक भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7 6 1 2 3 4 जितना हो चलेगा, लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए, डॉट रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, 0 to 9 जो भी चलेगा वो भी मैंने प्लस दे दिया। प्लस मतलब क्या है, ये सारे चीज़ों को प्लस आइडेंटिफाई होता है, मतलब ये है कि जितने हों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्लस नहीं दिए होते तो ये सारे चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होते। दिस इज व्हाट प्लस मीन्स, राइट। मतलब आप जो लिखे हो यहाँ पे नंबर के बाद प्लस, इसका मतलब जितने भी नंबर्स हो इट इज अलाउड। प्लस का मतलब जितने भी नंबर्स हो। अगर आप प्लस नहीं देते हो और नॉर्मल लिखते हो इस तरीके से 0 to 9, इस तरीके से आप लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, ओनली वन डिजिट, दैट्स इट, देन डॉट, देन वन डिजिट। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं 0 to 9 देन डॉट 0 to 9, इसका मतलब क्या होगा, 1.2, लाइक एनी नंबर, एनी कैन बी देयर, 7.3, 4.2, ये होता है इस रेगेक्स एक्सप्रेशन का मतलब, राइट। दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन अगर मैं प्लस दे देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 to 9 प्लस देन एक डॉट 0 to 9 प्लस, इसका मतलब क्या है, 0 to 9 मतलब एनीथिंग कैन बी देयर, anything can be there, then dot will be there, then any number can be there। ठीक, इसमें भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, राइट। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब यहाँ तक तो हो गया, लेट्स सी एंड चेक कि अब एरर प्रॉपरली शोकेस कर रहा है कि नहीं। लेट्स सी दैट आउट, लेट्स चेक दैट आउट। नो, स्टिल इट इज शोइंग दैट। इसका मतलब हमें यहाँ पे और कुछ भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। ऑब्वियसली वी हैव टू ऐड सम और द अदर थिंग, राइट। Let's see what is the meaning of this. Yes. Hmm. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, मैचेस बिटवीन 0 and 1 ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन, राइट, जिसको ऑप्शनल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ शोकेस करूँ,
यहाँ कुछ रेफरेंस तो दिया नहीं है। कुछ दिया है क्या रेफरेंस? आई डोंट थिंक सो। रिप्लेस लिस्ट डिटेल्स। ओके, यहाँ डिटेल्स में जैसे दिया हुआ है समझाने के लिए इजीली, यहाँ दिया हुआ है क्लिक अ मैच अबोव टू डिस्प्ले मैच एंड ग्रुप ऑफ डिटेल्स, माउस ओवर द ग्रुप राइट नाउ, सो ओके। मैच कलर रेंज 6 to 11। यहाँ पे भी प्रॉपर दिया नहीं है, 0 to 4। ज़ीरो कुछ दिया है क्या प्रॉपरली? नॉट येट। And build a suite of text that your experience should or should not match. Add a text. Suppose I write, okay, COLOR is matching, COLOYR is matching. No, it's not matching. Let me check. WR, is it matching? No. Match any। इसको मैं अब कैसे, how can I explain this? That's only I'm saying. Mhm. No. Let me see how can I make sure you get explain about it. Text, character. एक्चुअली यहाँ का डिटेल को शोकेस नहीं कर रहा है, वरना मैं एक्सप्लेन कर सकता था रिलेटेड टू दिस। ओके, इसमें सो एनीबडी, बाय दैट मीन टाइम किसी को कुछ भी डाउट पूछना हो रिलेटेड टू दिस? किसी को कुछ भी डाउट पूछना हो एडिशनल, बाय द मीन टाइम लेट मी थिंक व्हाट डाउट्स कैन, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कैन आई हेल्प यू फॉर दिस, मतलब व्हाट काइंड ऑफ thing can I use to make sure you get understand about this topic? Right. By that meantime किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो फिलहाल के लिए। By that meantime let me think of some examples so that I can make sure I can make you this thing understand.
or let me, so by that meantime let me see, can we do some experiment part in this rather than writing this much complex, because I know it will be tough for you to understand all these things. That's why let's make it more easy. Let's do some experiment in this. Select everything. This. Let's do some experiment and let's see if we can write all those things here properly. In place of case when, if I write null if, like anybody have any more doubts? Null if this, when this in numeric, if I can explain this. Let's see if we, it is working. Okay, this thing is working. So anybody have any doubt? Like I have found out a easy one. If you want, we can write this. We can explain this thing rather than talking about this question mark and all those stuffs. If you want, I can make sure you explain it related to this thing, because I think it will be very much tough to make sure you understand all this match between 0 and 1 of proceeding token and all. Okay, let's see. Let's understand this thing. Like by the meantime, anybody have any doubt in this? I have found out a easy way to make sure you understand this thing in a simple way. I mean to say, use of right. Okay, let's first understand what is null if. It may be a kind of new function for our assignment, but let us understand this. What is null if? Null if means simple. If there is null, like if null if is like if there is null, then convert the specific value. It is like that. I mean to say, simple. If null values are there in output, convert into specific terms. Okay, convert into specific terms. How will you make sure that SQL understand what specific terms can we give in that thing? It is like we have to tell SQL in this format. Null if value, whatever value we are writing, for us we have written regex p replace. Then you have to write the value you want to give. Value you want to give. Here we want an empty string. Take, simple as that.
We want an empty string. That's it. Okay, that's the thing. We are giving that, and that should be in numeric format, because earlier whatever we have used, it was in text format. Okay, so we have to make sure the data type should be in numeric, and wherever this thing means the value is there, it will return. See, wherever it is returning a empty string, give it a null. Simple as it is. Simple as it is, I mean to say. So null if is used to convert a specific value into null format, right? Like in case when, we used to write when the condition is following, give the output, else null. ठीक है, null, then end. Same thing we are doing here. ठीक है, same thing we are doing with the help of null if. We are saying SQL कि if the value is having empty string, give null in that place, right? This is what we are saying. And in this table, what we can see, let me select all the three. In this table, what we can see, whatever column is having, oh yeah, it is not showing. Whatever column is having a empty string, it is showing null. Whatever column is having empty string, it is showing null. That's it. We want that, right? And also one more thing, we want this column in numeric format. We want this column in numeric format, because the earlier cleaning that we have done, it was in text format, and no doubt the raw data was in text format. Okay, same thing, we have to convert the text to numeric, and wherever there is blank, we have to keep a null. That's it. Same thing we have done here. We have written null if the value that we want we have given, and in this value, if a empty string is coming, if empty string is in output, give us null. That's it. Simple. That's the thing. So in this, if you see, I have given null if, let me just copy and paste it here. What we have given, null if this thing is giving, an output, and the output is containing an empty string, then in that place of empty string, give me a null value. That's it. But that should be in numeric data type. Okay, that's what it is. Simple.
So I will change the answer as well in the this thing. Let me just do a change in that. I have to change the answer in the Google Drive answer sheet as well. Let me just change it here. Just a minute. Let me change it here only. Better. Hmm. Let me change it here. And then, okay, it's changed right now. Proper. Nice. So I have changed the solution in the Google Drive link as well. So no need to worry about. You can get the answer from there as well. Okay? That's the thing. And it is an easy answer, let me tell you. Rather than taking care of the this and this and this, it is easy to use nullif and get the output, right? So till this time, anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts here. Anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts here. Anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts here. Anybody have any doubts?
Anybody have any doubts in the live stream? And they can ask your doubts here. This time, anybody have any doubt in the live stream? Anybody have any doubts in the live stream? Anybody have any doubts in the live stream? Ask your doubts here. Anybody have any doubts in the live stream? Just ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream? Anybody have any doubts in the live stream? They can ask your doubt. Anybody, any more doubts in the live stream? Okay, let's. Oh, it's 22% charging. So in that meantime, let us see what next question do we have. We have a question for email cleaning. ठीक है. Let's see what we have for email cleaning and what kind of output can we find out in that. Yeah, hi, welcome to live stream.
हाय, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। कैसे हो? Okay, we have one question. Can you tell what you do as a DA in real life? Uh, or see, every day the requirements are different. Let me tell you, every day the requirements are different. Okay. First thing first, every day what happen every day in day in life of DA. Let me tell you, or what I do actually on kind of every day, the data gets updated. Okay. Data gets updated on daily basis. So whatever data gets updated on a daily basis, we have to make sure it is in proper data type format. Okay. Even though we have made automation part in Python, still in SQL as well. Python SQL दोनों में we have done the same thing. But let me tell you one thing, the data set which get updated every day still have some or the other errors in it, which are kind of different type, which are not in the automation part, and the data which are not in the automation part, we have to do it manually. Okay. So these are the things which we have to do on a daily basis, and it took कितना मतलब 2-3 hours it took on a daily basis. ठीक है. This is the first thing. Second thing, requirements. You have to take care of that. Requirements, what kind of, it is like whatever our client says to us. Suppose client says, like I cannot disclose what client says, but an example I'm saying. Example, suppose client says कि अच्छा, what if we give some kind of discounts in this and this product, what will be the kind of output in the profit part. ठीक है. Like this kind of things we have to take care of the requirement. This is just one of the thing I'm saying, like I cannot disclose actually what kind of requirement they ask, but this is just an, I would say, kind of thing which you can relate, like you can relate what kind of things they ask. ठीक. This is just a idea I'm saying. ठीक है. That's the thing. ठीक. And last but not the least, matlab this is in last 2-3 months only I'm saying. Earlier it was not there. In last 2-3 months they have jumped to Power BI, due to which they have jumped to Power BI. ठीक है. Due to which I have to take care of the dashboards as well.
So it is like importing the data, I mean to say the updated data every day, and also take care of the requirements plus cleaning part. Cleaning, it is like whatever things are done in automation, it is okay. Whatever does not come into automation, we have to do it in a manual way. ठीक है? Mostly this is what we are doing. Mostly this is what we are doing. Hey, hi Ashutosh, welcome to live stream. Hello sir, Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas, bhai. Merry Christmas to everyone. We have one query from Vision. After learning, can I get some freelance or something or some idea to get experience in real data? Experience in real data, bro. Let me tell you, experience in real data right now, due to privacy issue, I cannot help you out in that. I actually cannot help you out in that because it is not good for my career, not good for my career because of the signed contract. That's it. I cannot actually tell what things we do, but yeah, whatever projects you are saying, it is kind of 10 to 30% of the thing which is actually inspired from my freelance work. ठीक है? Actually inspired. Data set are different. But the work we carry every day are same. ठीक है? Data set are different, no doubt. But the work we carry every day are same. ठीक है? Because of the contract that we used to sign, like we cannot disclose kind of work we do in this. And yeah, until and unless, suppose, until and unless your client is saying, then yeah, it's okay, good to go. Client is saying, or I would say the client is in the live stream, or the client is aware of it, then yeah, it is good to go. But if not, then there will be a negative impact on your career. That's the issue. That's the only issue. Take. That's the thing. Anybody? Okay, we have one more. Sir, your voice is little low. अभी ठीक है मतलब actually just a minute. अभी ठीक है क्या? Like अभी is it okay? Because अभी माइक के सामने है. माइक थोड़ा अंदर था इसीलिए शायद. uh, एक मिनट. Let me check कि अभी सही है कि नहीं. हेलो हेलो हेलो. या तो यहाँ पे ठीक है. अभी सही है. आवाज़ की माइक थोड़ा अंदर था तो मे भी शायद आप लोग को थोड़ा लाइक लो आवाज़ आ रहा होगा. बट आई होप अभी सही होगा. आई होप. ये तो थोड़ा पास में रख ले तो आई होप अभी और भी क्लियर होगा. ठीक. भैया आई एम लर्निंग टैब्ल्यू. इज इट ओके और शुड आई शिफ्ट टू पावर बी आई? एनीथिंग यू कैन लर्न एनी हाउ. द लॉजिक विल बी सेम. Logic will be same. No worry. The thing is, if you want to learn Power BI, the only best thing which you will get is like everything is on Excel base. ठीक है? Because Power BI is actually made on this Excel का base. ठीक है? That's why. That's the only thing which gives a plus point to Power BI. ठीक है? Right. So if you are going on with
Tableau, it is good to go. There is no issue in that. Like Power BI and Tableau, they are like, I would say these two are mostly used by any of the company, mostly used. मतलब बोलते हैं ना जैसे 19-20 का फर्क है बस, मतलब कंपनी बेसिस पे, टूल बेसिस पे 19-20 का फर्क नहीं है, कंपनी के यूजेस में 19-20 का फर्क है, दैट्स द थिंग। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन स्विच योर विश, देर इज नो लाइक लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, लेट मी टेल यू दैट लॉजिक सेम ही यूज होने वाला है। हाँ, फॉर्मूला राइटिंग में डिफरेंस मिलेगा, यूजेस में डिफरेंस मिलेगा, यूजेस और आई वुड से सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर्मूला राइटिंग ये सब चीज़ में देयर कैन बी अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, बट लॉजिक पार्ट बोथ आर सेम। ठीक है, आई वुड से सेम फॉर tableau and power bi, both are same, so no worries for that. Okay, we have one more query. How much time you gave to yourself to reach up to this learning phase? By मैं if you ask me, 2016 2017 actually, in the last semester we have started studying about SQL. ठीक है, SQL and Python, but Python we are not that much interested. So SQL we have started learning about it. This is the first stage in my career where I have started learning in college. ठीक है, because anyhow we have to choose a option in I mean a additional subject, additional technical subject. ठीक है, plus in 2017 whatever my work ex was, there I was given to work in SQL. I mean 20% of the work was in SQL. Just database से data fetch करने वाला work was in SQL. Remaining 80% of work was in Excel. Pure Excel work. Pure. I would say pure Excel work means SQL में ज़्यादा था भी नहीं, मतलब not even 20%, मैं तो बोल रहा हूँ 20% is much more I would say. ठीक है, 80% काम अपना एक्सेल में ही था. Then in I would say like Flipkart, Amazon, it was pure SQL, Python, Power BI and Tableau, pure. तो I would say maximum 3 years तो लग ही गया, कितना 2016 2017 2018, because while I was working at that time also I was studying, because see 20% काम में तो you won't be learning that much. 20% of SQL work, I mean in your work ex, you won't be learning that much. You have to put an extra study effort in that. So you would say like 3 years kind of thing. 3 years on a regular basis, I would say. मतलब regular basis, regular study. Yeah, it took like that. Even though it is not like कि I'm having that much knowledge in that, still learning, because my like I don't have that much experience, like 5.5 years of experience. No doubt the companies were great, like Flipkart, Amazon, these are great company. I mean to say learning will be like huge, like you will be dealing with lots and lots of challenges in this huge companies. I mean to huge matlab, हाँ, huge companies, I mean to say you will learn a lot of things. And plus main thing is like the freelance work.
The freelance work taught me a lot rather than my corporate work. So the freelance work was like when handling these clients, their requirements are something different and I have to make sure that their requirement are fulfilled. ठीक है. I have to make sure their requirement are fulfilled. So learning was much more in freelance work, I would say. Related to the learning phase, freelance work, my learning was good. Like lots of things I have learned, lots of things I've learned. So that's what it is all about. Okay, we have one more query. Yes, sir. Okay, we have one more query. I am giving SQL daily practice from last 3 months, but still learning. Yeah, obviously, this programming language are like that, I would say. Any programming language you take, any programming language, anything, not only SQL, it is like C, या तो C plus plus, या तो Java, anything you take, it will take a lot of time to learn. Learning is, I would say, every day you will be learning some or the other thing, because these things are also upgrading from their own side. So you have to also take care of that. So it is what it is. Okay. So that's a good one. At least practice every day. Because if you stop practicing now, you will start forgetting about all those things. Like once you stop practicing, you will start forgetting about all those techniques and logic, about logics and techniques. ठीक है. That is the only issue in this programming language and also in maths. But anyhow, we are not taking care of maths right now. That's why. So programming language is like that. If you stop practicing, it's all gone. Okay, we have two queries. NumPy, pandas. Okay, that's good. Yeah, obviously, because these are the only libraries which you have to take care of. NumPy, panda, NumPy, pandas, matplotlib. These are the only libraries which you have to take care of for. Malab, these are not the only, these are the ones you which you will be working on. Like most of the work in Python in data analytics goes around this thing. That's why. Okay, we have one more query. NumPy, pandas, SQL, Tableau. Is that enough? Yeah, it is enough for data analytics. It is enough for data analytics, because these are the only things which I have also learned, and these are the only things which I have also used in corporate as well as in my freelance work. ठीक है. that that is the thing, right? Additionally, right now if you ask me what I am learning, so additionally I am still learning the snowflakes for data engineering. Still I am learning this still. And also for Power BI, additional things I'm learning in Power BI, additional things related to, mostly related to dashboard and all. ठीक है, mostly related to that, right?
So learning does not stop. It's like you have to be always be frequent in this learning stage. Let me tell you again. Okay, we have one more query. Thanks, Vi. I get refresh after your words. Yeah, it is what it is. Like this is the real thing which I have done, even though my colleagues, sorry for the spelling mistake, my colleagues they have done the same thing. My friends have done the same thing, and this is what people do. That's it. This is what people do. They learn, they use that skills in real work, or you would say in real project, and that's it. They learn and they grow. They learn and they grow. That's it. Simple. That's the thing. So by that meantime, uh, I hope anybody have any doubts in the live stream, they can ask here. Sorry. Anybody have any doubts in the live stream? They can ask your doubts in the live stream. I can help you out in this. Anybody have any doubts in the live stream? Or should we move to the cleaning part right now? Although you can ask your doubts meanwhile in that time. It is not like you won't ask your doubts. It's not like that. You can ask your doubts here. अबे क्या हो गया? हाँ. Right now we will do some email cleaning part. ठीक है? Let's see what kind of raw data do we have in email and how should we clean it. ठीक है? Let's see. So it's done. Okay, let's see. Let's write something. It's like select everything from raw customers. And let's see what column name we have for the email. We have email raw. ठीक है, चलो we only take that column and work in that. ठीक है, we have only email raw here. Let's copy it. Sorry. And let's paste it here. ये सब सही है क्या इधर? Okay. Yeah, there is some. I thought each and everything is correct here. That's the okay. So let's see what issues we have here. We have a blank here. ठीक है. Okay. Check this out. At the rate is not there. Then what we have? Yet one more at the rate extra. At the rate is there. Same goes for here as well. Here .com is not there. That's the thing. So and also here is one space. So this thing we have to take care of in email part. Okay? This thing we have to take care of in email part, right? So by that meantime, anybody have any doubts? Okay, let's go and see what should be our thought process. First thought process क्या होना चाहिए? If you ask me, simple. If you ask me and if I go in a simple way, I would say कि पहले जितने spaces हैं मतलब let me write it here.
पहले जितने भी स्पेसेस है मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द ईमेल, जितने स्पेसेस हैं उसको पहले ट्रिम करना है, ठीक है, क्योंकि वो इजी है करना। हाउ वी विल डू इट, वी विल यूज बी ट्रिम द कॉलम नेम। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें व्हाट विल हैपन हियर, इसमें क्या होगा, जितने भी स्टार्टिंग और एंडिंग में जितने भी स्पेसेस हैं इट विल गेट रिमूव्ड, सिंपल, ठीक है, इट विल गेट रिमूव्ड, राइट। So, okay, we have one query. Your resume is rejected for DA job after making project adding skill. Suggest some important tips or in format of any company like big MNCs or others. See, let me tell you, if I also give my resume right now in any company, it will get rejected. Let me tell you that. It is not like ki each and every company will accept your resume, because each and every not even your, even I'm talking about my, even it is about everyone. Each and every company have their own resume selection, have their own requirement, ठीक है। if it is suppose if it is rejected in first company, in second company, in third company, it might get selected in the fourth one, ठीक है। so it is not like कि if it is rejected in one company it will not get accepted in others, it is not like that, ठीक है। I have also applied the same resume or the CV in lots of companies, ठीक है, and it gets rejected, ठीक है, it's actually get rejected, so it is not a issue in this, it's not a issue in this, whatever CV and resume you got, just keep applying, because see, each and every company have their own requirement phase, they write something here, they may need something else, ठीक है। so it's not like कि one company you apply and it will get selected, like it is 100% sure it will get selected, no, chances are very low. if you there are chances, if you apply in 100 companies, chances ये है कि it can get selected in one, two or three companies, it can get selected in three companies, like that, in 100 apply, or maybe this is the shorter thing I'm saying, maybe in 1000 apply your resume get can get selected in five of the companies, it is like that, ठीक है। so don't think कि whatever, there are lots of people out there who had made more good quality project than we are making here or we are discussing here, so might be their CV got accepted, might be their project are having some, or I would say some requirements which are actually needed by the company for the given vacancy, ठीक है, ठीक। and if you ask me, the for this Flipkart company, for this Flipkart company it took me around 7 months with the same resume, like I have applied, I don't know how many rejection I have received, I have applied in mostly all the data analytics company during the COVID time, still from 7 months, ठीक है, same resume, same CV, same thing, not even a single change. Projects get changed as per domain, but the thing is, it is getting rejected in, I think, more than 1,000 companies, I would say. I think in whatever company I get DA, I just apply it. Take it is like that. That's the thing. Okay, we have one more query. After tailored resume according to a job role,
I am 2024 password. If I apply any intern or any fresher role, most of them not hire. So what can I do in project like current job market? See, let me tell you, just apply, not nothing else. That this is what I'm saying now. More than 1,000 plus applications I have given, that too in COVID time. 1,000 plus applications I would say. That too in COVID time. ठीक है. And if you ask me how many got converted, even after having experience of 1 year and 6 months experience, I have got first of all how many it was converted, how many it was converted where I have given my, I mean to say, interviews and exams. It was like अराउंड 5 के आसपास शायद 5 5 6 companies I have given. I mean the application was converted to interview. ठीक है. Out of 1,000, even after having 1,000 plus, I would say 1,000 plus, conversion rate is 5 or 6 for interview, and out of that one got successfully converted. That was Flipkart. That too having experience. ठीक है. That too having experience of 1 year and 6 months, and that too in data domain. ठीक है. Not even in any other domain. That too in data domain, in supply chain domain. ठीक है. I have been rejected that many time. 1,000 plus. So there is only one option. Just apply. That's it. That's the thing. Okay, we have like quality project only help me, or anything you suggest like for MNC or any other form of domain. Just why I'm saying this related to project, because of ATS. ठीक है. उनका जो ATS में जो भी keywords हैं, it will help you to pick your CV or resume. ठीक है. That's the use of the project. ठीक. And let me tell you one thing. First, try with the startup companies. ठीक है. I mean, give priority to startup companies. Give priority to startup companies first. ठीक. It is good like you are applying in MNC, but MNCs very less chances, like very less chances are there, like they can hire some fresher. Like if you are a fresher, I'm saying, if you are a fresher, if you are having experience and you can convert it into data analytics experience, then yeah, MNC is good. ठीक है. Why I have been applying to Flipkart and got selected? Because of 1.6 years of experience. ठीक है. Otherwise, it would be really tough for me. Not even tough, like I would not have been selected as well. Because they were asking for someone who is having 1 year to 3 years of experience in data domain, that too in data domain, and also supply chain. So I was having an experience in that. That's why. But the first company I was working, it was like placement, college placement. So that was a different thing. But if, and even the one more thing I'm saying, even after having 1 year and 6 months ka experience, I had 2 year ka gap in MBA. That is also the main thing, and that too COVID batch. ठीक है. That too COVID batch. It is like कि experience was there, then break was there, career break, or you would say study break was there. That too, it took me like 7 months of time. It took me around 7 months. So no need to worry about, just apply by tailoring your CV. That's it.
as per project and all. And always give, like, if you are a fresher, if you are a fresher, first priority to startup. If experience, then mid-level MNCs plus mid-level startups. Or if good quality MNCs, if they are hiring for the experience that you are having, I mean the year of experience you are having, then yeah, it is good to go. Okay, that is the thing. Okay, so first of all, make sure you are giving your, क्या बोलते हैं, make sure you are giving your time and energy to this companies, startup companies. ठीक है, make sure you are giving your time and energy to the startup companies. ठीक है, once you reach the startup companies, you will have a good quality experience, then yeah, then it is good to go, right? Just a minute. Yeah. हम्म, ठीक है, that's the thing. And don't think if one company rejected your resume, that doesn't mean कि other companies will reject the resume. ठीक है, it is not like कि if one rejected then others will also reject. Same resume I was giving from last 7 months, same resume, same. Not even, हाँ मतलब, obviously projects are tailored मतलब as per domain I am applying and giving up the projects, but yeah, same one I'm doing. Just a minute. ठीक है, just a minute. Just a minute, let me check once. Yeah, हाँ, अभी ठीक है. So what I was saying, the thing is, see, it is not like if one company, where I was, yeah, if one company is rejecting doesn't mean that other companies will also reject. Rejection is a part and it will happen. Even though in COVID time, with experience, if they're rejecting, then like it will be there. Like I know कि it is a COVID time, layoffs are going on, and very less chances of getting rejected. But still, with cool mind, I was just applying. This is because this is what I have in my hand. That's it. This is what I have in my hand. I was just applying and practicing on daily basis, because anyhow if I stop practicing I will forget the use of all the logic and all. Take that's okay. We have one query. When I applied for startup or small firms, resume selection is a big deal due to, yeah, it will be there, it will be there. Obviously you see the number of students are either graduating or are changing the domain, or are changing the domain in what, in data analytics. Why data analytics? It is easier, believe me, it is easier than what,
easier than software development, and I would say even though website development easier, मतलब data related जितना at least if you learn SQL and Python more than enough. हाँ, no doubt competition is there, Power BI is required, but still these two things good to go. You are already 80% done as a DA. So it will be there. It will be there for startup companies, for full-time job role, I would say, or for internship. There will be huge competition. There will be huge competition. But see, but only those people will get ahead who are consistent in applying. I mean to say, believe me. See, this is what how things happen. Suppose there are 1,000 people. ठीक है. Each and every 1,000 people for 6 months applied to some or the other companies, and none of them got converted. What happens after 6 months? This 1,000 people get reduced to 800 for the consistency part. I mean to say consistency. This get reduced to 800. Okay. This 800 people, same 800 people from 1,000 apply for next 6 months, and in this in this obviously only maybe one or two got converted, others don't, which is like very much less. So out of this what will happen? 400 will get demotivated and they won't even apply. ठीक है. ठीक. Then what happened in that 400 for next 6 months? The same people I'm saying. Here more people will get added up. No need to worry about. More people will get added up. After 6 months, someone who get graduated or those who want to switch their domain, they will also get added up in this. But still, out of 400, if in next 6 months you see very less people, like 20, 30 get converted, and it get demotivated, and it is like remaining 100. Out of this, if you create this consistency, chances will be there कि in next 6 months you might get a call and there will be a good switch in your job domain. Like if you check in YouTube, like I have seen people like there's a guy who is working in Nokia. If you see that, he had applied for each and every company from last 4 years. Let me tell you, from last 4 years, no conversion, I would say. No successful conversion in any job role. Matlab he was not having a full-time job, first thing first. No full-time job role in any of the company. Internship, yeah, 2 3 months ka internship. Still no job conversion for last 4 years. 4 years, ठीक है. But after 4 years, he got his first job role in Nokia as a BI developer. Don't know how much is the salary, maybe 18 LPA, something like that. But still, it is worth it. It is worth it. If you convert this 18 LPA in 4 years, to 4 4 just 16, 4.5 LPA per annum. Like people are earning this much after college, but still, he will be earning in 1 year after 4 years ka wait. So it will be there, bhai. Okay, sir, like, can I connect with consultancy agency for job? Like, what's your opinion? Is it really help me for job urgency? If it is legal, I mean to say not legal. If it is genuine, then you can go for it. But let me tell you,
for the consultancy part, what I have seen in my college life, I don't know if it is going on the same thing right now. When I was studying, I mean when I was doing my btech in 2013-17, that time people had joined through this consultancy and all. ठीक है, ठीक है, my friends, I am talking about my friends. To this मतलब whatever consultancy they have opted for, they have given a job placement in companies like TCS and Cognizant, like this kind of thing through reference. Obviously consultancy have their मतलब people who have a good relation with them inside the company, who are as a working as an employee, and in a legal way they have given their references and they went. It is not like कि backdoor entry या कुछ ऐसा नहीं है, backdoor entry वगैरह कुछ नहीं है, no backdoor entry, not even backdoor entry, let me tell you. But you know what happened after probation period? After probation period, whatever project they have enter, they came to bench. ठीक है, I mean to say, whatever project is not working or whatever project like whatever project the company is handling, मतलब TCS, Cognizant, whatever project they are handling, all those bad projects or the bad clients who keep their employees mostly in bench, they have hired. Actually, my friends got hired in that project only. And after clearing the probation period, they were all in bench. And even though after next 3 months, they were laid off. So that's the thing. But people who got hired through college, मतलब प्लेसमेंट वाला कॉलेज, प्लेसमेंट सेल के थ्रू, या तो मतलब बोलते हैं ना जो कॉलेज प्लेसमेंट से जो हायर हुए हैं, दे आर स्टिल वर्किंग राइट नाउ विदाउट गेटिंग laid off. ठीक है, because whatever I have heard in like IT companies like Accenture and all, because most of my friends are in Accenture, that's why, where right now they have shifted to different companies. What Accenture does is like those people who came through this agencies or consultancy, they are the first target for layoff. Malab not for every employee, let me tell you, not for every employee. If it is like 100 people have came through this agencies, chances are like 2 to 3 unlucky people get laid off. 2 to 3 unlucky people, ठीक है, unlucky. It is not like each and everyone get laid off. It is not like that. It is not like that. But these are the first priority, let me tell you. So if that agency, I mean the consultancy agency is actually genuine or having a good track record or past record, then go for it. ठीक है, then go for it. Otherwise, you know, in today's scenario what is happening, lots of people are there in job search and scams are also there, due to which scams are also there. So make sure you take care of that. ठीक है, so it is just like a loop. People in job demand, ठीक है, scams are there because of this job demand, because of this job demand scams are there, and due to the scams their business are going on, so it is like that. So it is directly proportional. ठीक है, if there is high demand on something,
scams will be there. Simple as that. Simple as that. Whatever thing you see, scam will be there if there is any high demand. So it is what it is. So always make sure कि whatever consultancy you are let me reset it. Whatever consultancy you are going for, whatever consultancy you are going for, make sure they are genuine. And how you will check the genuinity? Always check the past records. ठीक है? Past records मतलब in past records did they give good quality paste placement? Good quality मतलब the thing is whoever got placed, they are staying in the company for more than 1 year kind of thing. At least. Because right now this what we say right now this layoff season is going on. That's why I'm saying this layoff AI and all. ठीक है? That's why I'm saying just take care of all these things. And you know you if you go to LinkedIn or something, you can see a lot of scam companies which are going on. ठीक है? So please take care of that. Be aware of that and go with the flow. That's it. Well, thank you so much, sir. Now I am doing a remote internship from platform which with some other country team on project. Like anything you know about accelerate पता नहीं भाई पता नहीं I have to go and check that out. Accelerate का idea नहीं है भाई. I have to check. See, first how to find out if the company is fake or not. If they are asking for this क्या बोलते हैं money and all, then obviously that's fake. If they're not asking for money and all those things, then yeah, it's okay. Let me check. Accelerate. I have to check and find that out कि it is ठीक है कि नहीं, because I am also hearing about this for the first time. That's why. But anyways, if they are not asking for money or something, then yeah, it is obviously genuine one. If they are not asking, but anyways, I have to go and check that out. I have not checked it properly from my side because I came to know about this company right now, and it is not like ki nobody knew about this company, then this company might be fake. It is not like that. There are a lot of companies which everybody don't know about it. So just check. It's an organization Dubai based, so it's 1 month project oriented program where we will build, gain some experience at last, and they give certificate of internship and scholarship. Yeah, then it's good to go. If they are asking for money, then just be aware of it. If they are not asking for money, yeah, then you're good to go. If they are asking for money, then please be aware of it. That's it.
ठीक है, that is what it is all about. So by that meantime, anybody have any more doubts? Okay, we have one query. In that platform, most of the teammates are from SA, India, Dubai, and other countries, but in my team, all are from Nigeria. No, no worries, no worries. Just go and work in that. See what learning you are getting from there. Learn that thing, and I hope they will give you an internship certificate. Okay. So if you are getting an internship certificate, then yeah, it's good to go. And they also give some scholarship, star performance $1,000. सही है यार फिर, that's a good one. If they're giving you some मतलब अचीवमेंट के लिए कुछ कैश कुछ दे रहे हैं, या फिर जो बोलते हैं ना कैश एंड कैशमेंट, लाइक मनी एंड कैशमेंट काइंड ऑफ थिंग्स, इफ दे आर गिविंग, या गुड टू गो. बट just make sure they are not asking money for giving you the internship certificate. Make sure they don't do that thing. That's why I'm saying just learn whatever learning teaching they are giving you, just learn and have a good quality experience. That's it. Yes sir, I'm just doing it for internship experience. सही है, सही है यार, सही है. Hi Trusha, welcome to live stream. Welcome to live stream. I am having 3 years of work ex as a DA. सही है. Asset management at service now. Okay. But I resigned the job as it was contract role, and however I might contract end next about the project. But why did you resign it? Like if it was going on, like okay, no worries for that. Might be a toxic work culture there. No worries for that. No worries for that. But at least you have 3 years of work ex. That's a good thing. So just start applying and searching for job role. That's what I would recommend. And main and also one of the good thing is like you are having a good work experience in data analytics. So yeah, it is good to go, I would say. You are having a relevant work experience. So yeah, it's good to go. So use this work ex and move ahead. That's it. No worries for that. You are having, at least you are having work ex now. So just start applying and practice every day. Because the thing is, if you sit idle, I mean to say, if you are not working in somewhere, if you are not working, then that knowledge that you actually used to use in your work experience will get vanished. Like if you don't practice these things every day. Practice matlab questions, logic, techniques, or you can just go with the lead code problems. ठीक है, you can just practice and go with the vacancy, whatever vacancy you get in any of the company for data analytics, and you are good to go. ठीक है, like, and even though whatever job vacancy I am able to see from LinkedIn, I just uh, copy and paste it in my YouTube post. So if you want, you can go and apply there as well. We have one query for SQL, Excel, Power BI. Which type of projects can you suggest? Proper DA project. At least whatever project I am having right now, it is related to, I would say, it is related to basics
level 1 and 2 kind of project. So if you want, you can go and check that out. Okay, if you want, you can go and check that out. Mostly these are into healthcare project or retail kind of project, and the project is related to matlab full end to end kind of thing. Like if like you are a data analyst now, you know like how things work. It is like I don't know like these things work in your company on a daily basis or not, but all this end to end projects which I have given in the YouTube, in my YouTube channel, it is all about फ्रीलांस का प्रोजेक्ट, ठीक है। फ्रीलांस का प्रोजेक्ट, तो फ्रीलांस का प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे रॉ डेटा का इंपोर्ट, देन क्लीनिंग, दैट्स द थिंग। ओके, कैन यू प्रोवाइड मी द प्रोजेक्ट लिंक? या श्योर, लेट मी सी दिस वन। डोंट नो व्हाई इट इज नॉट, एक मिनट, ओह सॉरी। Although this all links are present in my description box of this YouTube live stream, but still I'm giving you out here. Although if you go and check out my description box of this YouTube live stream, that live stream you have joined, you can go and get all those projects. No worries for that. Power BI project. Okay. And even though if you go and check out my YouTube post, you will get to know about other, like on January 1st we will be working on Power BI का finance plus healthcare का project, ठीक है। Plus I am having other projects related to members as well, but there I have used a lot of kind of advanced techniques and all in this. If you want, I can show you here, like let me see if it's there. Hmm, let me check that out. Hi everyone. So it is like that kind of project, if you can check that out. Means this is for the members one. So it is like related to see switch I have used here. If you can see, I have used switch in this. Matlab thoda high level project for the members. And like this kind of explanation will be there, and the star schemas and all I have used. Although you can take out the free projects what I have given you the link, you can go and check that out. And although you are having a good quality experience, like experience is there, you can take that data set and work on the same data set, ठीक है। work on the same data set with additional questions from your own side, ठीक है। additional question from your own side, so that will be good to go, ठीक। because although you are having a work ex, so you know what kind of challenges you have faced when you are working. So you have the data set, you have the questions, you have the requirements, like whatever requirements are there in the project, you have that. Suppose there are like 10 requirements or 15 requirements, you have that. You can add some more requirements from your own experience and use that project in a unique way, okay? You don't need to find any other data set, you don't need to find any other thing, just you have the data set in front of you with this all projects. And although we like upload projects on a daily basis, I'm not sorry, on a monthly basis, so on 1st January you will be able to see finance plus healthcare का project, ठीक है। Actually this is the project I'm saying, मतलब this much things are done for the members one, like this kind of tiles and all I have used, ठीक है। mail communication is there, you I know you might be familiar with that because you are having experience in this domain, data domain, so you are familiar with all these things. But still if you are asking for project, you can take this data set, take this project, take the requirements as well, whatever requirements I have
told you in this project and add more requirements from your own side, that too from your own experience. ठीक है? What will happen in that, you can talk about these things and make your skills look proper in front of the recruiter. ठीक है? So recruiter will be happy to know कि चलो in 3 years of work they have done a lot of thing they have managed, lot of things they have seen with the use of tools like SQL, Power BI, Python, and that will be a good, like I would say, positive impact in the interview in front of the recruiter. So that is the thing. Like this kind of things we have used. But the thing is, this is for the members one. So for non-members, let me show if it is. Yeah. Let's see that. Although this is for the non-members, so project is there for both. No worries for that. And for every month, project will be there. But for non-members, it is like थोड़ा basics वाला thing रहेगा. But on a monthly basis, every month I will be upgrading the level of non-members project as well. So it is not like necessary कि you have to take the membership. It is not necessary. Let me tell you. Every month we will be upgrading our quality of project techniques and all for this. ठीक है? So these are the things. See, in this also I have used this thing, matlab tiles for the filtration part. All these things I have used already. This is what it is all about. And we have used DAX right now in this. See, DAX has been used. ठीक है? It is there. So that's all about it. Hey, hi Yash, welcome to live stream. Welcome to live stream. For doing this project, how many days it will take? Depend on your understanding. Like the project, mostly the project is around 3 to 4 hours. Depend on depend on your understanding of the project. ठीक है? ठीक. Depend on the understanding of the project and how fast you can take up the knowledge. Anyhow, you are having a work. See, workx is there, so no worries for that, because the project which I have given here is kind of basics level 1 or intermediate level 1 kind of project. Yeah, the thing is, for members, whatever project I have given, kind of intermediate level 1 and intermediate level 2. ठीक है? That is the thing. But for the free projects, it is like बेसिक्स का 1 and 2 लेवल एंड इंटरमीडिएट का लेवल 1. ठीक है? इट इज लाइक दैट. ठीक. इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट पार्ट. ठीक है ना? Okay, we have one more query. Can we ask question on LinkedIn? Yeah, you can ask question on LinkedIn, and even though my mail ID is there, the thing is LinkedIn में जो DM रहता है ना, मतलब जिसमें आप मैसेज भेजते हो LinkedIn में, उसमें टाइम लगता है शोकेस करना है. पता नहीं क्यों लिंक्डइन का ये बहुत ही बेकार इशू है. इवन दो लेट मी टेल यू दैट इफ यू सेंड मैसेज राइट नाउ, आपको कब सिंक होगा, कब रिफ्रेश होगा, मेरे उसमें दिखाएगा आई डोंट नो, लाइक टाइम लगता है. नो डाउट, अगर आप लिंक्डइन में फ्लेक्सिबल हो टू आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर इट. नो वरीज अबाउट इट. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एनीवेयर. लिंक्डइन है. ओके, लेट मी गिव यू द लिंक्डइन आईडी एज वेल. तो मेरा लिंक्डइन आईडी पे है, मेरा मेल आईडी भी है. वेर एवर यू आर कंफर्टेबल टू आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन आस्क. ठीक. ऐसा नहीं है कि आपको मेल या लिंक्डइन में ही पूछना है. जहाँ पे मन करे आप पूछ सकते हो. लाइव स्ट्रीम है, कमेंट सेक्शन है. जितना हो पाएगा मैं आपका हेल्प कर दूंगा. ठीक है? वट एवर नॉलेज आई हैव, वेर एवर आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू आउट. ठीक. सॉरी. तो
एनी मोर डाउट्स? अभी तो 10 भी बज गए। 1 मिनट। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। इट विल बी ग्रेट विथ मेल आईडी। यस, मेल आईडी का क्या क्या बेनिफिट है ये अगर मैं आपको बोलूँ, मेल आईडी में क्या है, कोई भी एरर वगैरह आता है ना, मतलब जैसे आप कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, कुछ भी रिलेटेड टू सीक्वल, रिलेटेड टू पाइथन, रिलेटेड टू पावर बीआई, या तो कोई भी टूल्स में आप कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें भी कुछ एरर आ जाता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मेरे को सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप अटैच कर सकते हो और ईमेल में अटैच करके मेरे को डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। आई कैन हेल्प यू आउट, इसलिए मैंने मेल आईडी किया हुआ है, बिकॉज आई नो कि जब मैं खुद पढ़ रहा था, जब मैं बिगिनर था, मतलब बिगिनर तो अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम भी कुछ भी इश्यूज होते थे, मतलब कॉर्पोरेट फील्ड में कुछ भी इश्यूज होते थे, तो मेरे जो मैनेजर थे वो ही वॉज लाइक 1-2 साल बड़ा था मेरे से, तो एक काइंड ऑफ ही वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी, काइंड ऑफ। और उनको अच्छा खासा सीक्वल और पावर बीआई ये सब आता था, सीक्वल, पावर बीआई, पाइथन। तो वो बोलते थे कि यार कुछ भी डाउट होता है तुम मेल कर दे स्क्रीनशॉट लेके, मैं हेल्प कर दूंगा उससे। तो वही आइडिया अभी आया, इसीलिए मतलब मैं जब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया, मुझे मालूम है कि सब, ईच एंड एवरी वन इज प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस ऑन सम ऑफ द अदर टूल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीक्वल पाइथन में कर रहे हैं, कहीं ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑब्वियसली, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एरर और मिस्टेक्स आएगा ही, दैट इज ऑब्वियस बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए मैंने मेल आईडी बना के रखा है और दिया भी हुआ है, ताकि कुछ भी इशू हो आप लोग डायरेक्टली मेल करो। और बेस्ट पार्ट क्या है, वो रिटर्न फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। बेस्ट पार्ट ये है कि रिटर्न फॉर्मेट में रहेगा, और कभी भी चाहे आप वो एरर फाइंड आउट करके चेक दैट आउट कि कहाँ एरर था या कहाँ कुछ और अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, कहीं आपको कुछ और एक्स्ट्रा सीखना था, यू कैन फाइंड दैट आउट, इट विल बी इजी, ठीक है। इसलिए मैंने मेल आईडी बनाया फॉर दिस पर्पस ओनली। या इट विल बी ग्रेट विथ मेल, हाँ मेल आईडी दिया। रोज़ लाइव स्ट्रीम होता है क्या? यस, लाइव स्ट्रीम रोज़ होता है, एक्चुअली 2 लाइव स्ट्रीम होते हैं, ठीक है। जो पहला लाइव स्ट्रीम होता है वो एक्चुअली वर्क लाइव स्ट्रीम रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, बट द थिंग इज मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो ड्यू टू विच म्यूट रहता है फ्रॉम माई साइड, मतलब अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोग से, उसमें म्यूट रहता है, ठीक है, बिकॉज मीटिंग्स रहते हैं एंड क्लाइंट को इशू रहता है बिकॉज ऑफ ऑल दोस, ऑल दो इट इज अलाउड, मतलब क्लाइंट परमिशन दिया, बट स्टिल दैट्स द थिंग। उस पर अगर आप लाइव स्ट्रीम में लाइव चैट में डाउट पूछोगे तो आई कैन हेल्प यू आउट, बट इन अ रिटर्न फॉर्मेट, ठीक है। रिटर्न फॉर्मेट मतलब लाइव चैट में ही मैं लिखूंगा एंड आई कैन हेल्प यू आउट एट दैट टाइम इन लाइव चैट, ठीक है। आई वॉन्ट बी एबल टू टॉक टू यू ऑल। और जो सेकंड, ये तो पहला लाइव स्ट्रीम है, जो सेकंड लाइव स्ट्रीम होता है उस पे लाइक वी आर डूइंग राइट नो, आई टॉक एंड हेल्प यू आउट इन दिस, एनी ऑफ द डाउट्स यू हैव। उस पे अभी जो सेकंड लाइव स्ट्रीम में स्क्रीन शेयर एंड ऑल ये सब रहता है, लिख सकता हूँ एंड बात कर सकता हूँ, दैट्स द थिंग। सो दिस इज द थिंग, या वी डू लाइव स्ट्रीम एवरी डे वी डू लाइव स्ट्रीम, सो दैट इज द थिंग, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट, चलो सही है, बढ़िया, दैट्स अ गुड वन। So, anybody have any more doubts in the live stream?
Anybody have any more doubts?
ओके वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम यश। आई एम लाइक बिगिनर, तो काफ़ी क्वेश्चंस है पाइथन में, सॉल्व नहीं हो रहा है उसका कुछ। ओके श्योर, पाइथन में कुछ भी डाउट वगैरह हो पूछ सकते हो। मतलब पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स राइट? पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स में कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो, आई कैन हेल्प यू आउट। कि पाइथन क्या है, यू नो मोस्टली ज़्यादातर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या तो वेब डेवलपमेंट के लिए काम आता है, बट स्टिल रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स कुछ भी हो, आई कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट, राइट? मेल वगैरह भेज देना, कुछ भी कहीं पे एरर वगैरह आ रहा है तो हेल्प कर दूंगा। अगर नहीं आता है तो कहीं से सीख के हेल्प करूंगा, अगर आता है तो आई विल हेल्प यू आउट, अगर नहीं आता है आई विल डायरेक्टली से कि लेट मी लर्न दैट थिंग एंड देन आई कैन हेल्प यू। ठीक है, बिकॉज क्या है, पाइथन एक तो पहली बात ओपन सोर्स है। आज अगर कुछ पढ़े होगे, देखना 2 हफ्ते बाद क्या पता वो चीज़ कुछ नया आ गया हो, बिकॉज ओपन सोर्स है। कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई कुछ फंक्शन क्रिएट कर रहा होता है, सो दैट्स द थिंग, इट इज़ लाइक दैट। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस, यू कैन आस्क मी इन द इधर इन द लाइव स्ट्रीम, और या तो आप चाहो तो उसमें मेल में पूछ सकते हो, राइट? ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट हो पूछो। ये 10:30 हो गया, आई हैव टू क्लोज माय लाइव स्ट्रीम, बट एनीवेज। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट? ओके ओके, वी हैव वन क्वेरी। लूप में स्टार पैटर्न में काफ़ी प्रॉब्लम है। ओके, स्टार पैटर्न, नाइस नाइस, नो वरीज नो वरीज। कौन सा, ये वाला स्टार? ये तो बहुत इंटरव्यूज में भी पूछा गया होगा, नो डाउट। इसमें सिंपल कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है यहाँ पे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लूप्स यूज़ करना पड़ेगा, रेंज यूज़ करना पड़ेगा। इस पे रेंज क्यों यूज़ करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न 1 2 3 4। ऐसे भी आप चाहो तो बना सकते हो, मतलब इंटरव्यूज में ऐसे भी पूछता है, मतलब जैसे सपोज इस तरीके का स्टार है, इस पे रेंज का ज़रूरत नहीं है। इस पे आप डायरेक्टली बताओ कितने रोज में आपको स्टार चाहिए, यू विल गेट दैट आउट। अगर आपको ट्रायंगल वे में पूछना है तो इसमें रेंज लगता है। ठीक है, दो तरीके का है, सिंपल एंड इसमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर क्या बोलूँ, जैसे कौन सा, अगर आपको ट्रायंगल का देखना है कि कौन सा देखना है ये बताओ, विच वन यू वांट?
कौन सा टाइप का स्टार में आपको सीखना है, यू कैन आस्क। ठीक है, ओके, वी हैव वन क्वेरी। ओके, नो प्रॉब्लम, विल मेल यू टुमारो, टेक रेस्ट। ओके, ट्रायंगल ही बना दिए, ठीक है, ट्रायंगल, राइट, ट्रायंगल लाइक दिस बना अभी जो है, ठीक, इट इज लाइक स्टार। ठीक, सिंपल है। इसमें क्या रहता है, इसमें आप देखो किस तरीके का पैटर्न में दिया हुआ है। यहाँ एक स्टार है, दो स्टार, तीन, चार, ठीक है। चाहे तो आगे पांच भी लिख सकते हो, योर विश, ठीक। इजी वे में सिखा रहा हूँ तो चार का ही लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आप इस पे क्या बोलते हैं, पाइथन को यू विल से इन देयर लैंग्वेज, ताकि वो वैसे प्रिंट आउट करे। सिंपल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक स्केलेटन, कहाँ गया यार, आपको एक स्केलेटन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि कितने रोज में हमें बनाना है, दैट्स द थिंग, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सपोज चार रो में बनाना है, ठीक है। तो मैं पाइथन को बोलूँगा कि मेरे को चार रो के रेंज में दो। अब पाइथन क्या समझेगा, रेंज तो ठीक है, रेंज बता दिया। अब आप पाइथन को क्या बोलोगे, फॉर सपोज ए इन रेंज, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ पाइथन को कि इस रेंज में मेरे को एक स्केलेटन सेट करके दो। पाइथन एक स्केलेटन क्रिएट कर देगा, बोलेगा ठीक है, ए इन रेंज ना, मतलब दिस इज फॉर वन, दिस इज फॉर टू, दिस इज फॉर थ्री, एंड दिस इज फॉर फोर। जैसे आप लिखते हो ए इन रेंज, तो उस पर वन टू थ्री फोर लेता है। जो लास्ट टर्म या जो डेटा आप लिखते हो उसको वो कंसीडर नहीं करता। फर्स्ट इज कंसीडर एंड सेकेंड लास्ट इज कंसीडर्ड, सो इट इज लाइक n माइनस वन, ठीक है, ठीक। तो वो एक पहले स्केलेटन क्रिएट करेगा, ठीक, एट द बैक एंड। यहाँ पे वन टू थ्री फोर, ठीक है, दैट्स द थिंग, सिंपल एज दैट। अब मैं क्या बोलूँगा पाइथन को कि अगर आप जैसे आपने स्केलेटन क्रिएट कर दिया, अब उस स्केलेटन में इट इज लाइक, अब उस स्केलेटन में इस तरीके से रहेगा बैकएंड में। इट इज नॉट लाइक कि रिटन लाइक दिस, इट इज नॉट रिटन लाइक दिस, बट इन द बैकएंड इट इज लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से बनाया हुआ है पाइथन ने। अब मैं बोलूँगा कि मुझे या तो स्टार दो या तो जो भी देना है दे सकते हो। अब मैं चलता हूँ सेकेंड लाइन में, तो ये पहला लाइन है, फॉर ए इन रेंज दिस। अब इसके अंदर आपको लिखना है। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा फॉर बी इन रेंज ऑफ ए, ठीक है। मैं बोलूंगा जो ये रेंज आपने क्रिएट किया हुआ है पाइथन को, जो ये आपने रेंज क्रिएट किया हुआ है, इस पे मेरे को कुछ टर्म्स चाहिए इन प्लेस ऑफ ए, ठीक है। हाउ इट विल बी और हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा इसके अंदर रहना चाहिए, तभी जाके ये ए के रेंज को क्वालिफाई करेगा, नहीं तो नहीं। अगर आप इसके अंदर नहीं लिखे तो ऑब्वियसली इट विल शो एन एरर, ठीक है। मतलब एक तरीके का इसको टेक्निकल टर्म्स पे इसको इनर लूप बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है इनर लूप, ठीक है, लूप के अंदर लूप, ठीक, दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग। मतलब आप बोल रहे हो हर रो में मेरे को कुछ प्रिंट आउट करके, मतलब जो आपने स्केलेटन बनाया है
एक ट्रायंगल का स्केलेटन बनाया, उसके अंदर मेरे को लेके जाओ, तो उस लूप के अंदर वो आपको लेके जाएगा। एंड हाउ दे विल टेक यू आउट इन दिस दे विल टेक यू आउट विद द हेल्प ऑफ इनर लूप। ठीक है, दैट्स द थिंग, इनर लूप। अब आप बोलोगे कि यार ये बी इन रेंज ए क्या होता है? यू आर टेलिंग देम कि जितने भी आपने यहाँ क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर मुझे लेके जाओ फॉर बी इन रेंज दिस। ठीक है, अब तीसरा लाइन में आप क्या बोलोगे? मुझे हर जहां पे भी ए लिखा हुआ है वहां पे मेरे को स्टार प्रिंट आउट करो, और स्टार ऐसे स्ट्रिंग कोटेशन रहेगा। ठीक है, स्टार प्रिंट आउट करो। ठीक है, यू विल से दैट स्केलेटन के अंदर लेके जाओ और स्केलेटन के अंदर मुझे स्टार प्रिंट आउट करो। ठीक है, और एक मेन चीज यहाँ पे लिखोगे एंड विद दिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो स्टार है ये सेम लाइन पे प्रिंट करो। ठीक है, सेम लाइन पे प्रिंट करो, और जितने डैश है उतने होने चाहिए। ठीक है, एंड विद दिस, एंड विद दिस मतलब जितने डैश है इट विल स्टार्ट विद दिस एंड एंड विद दिस वन स्ट्रिंग। बट जो फर्स्ट वाले में जाओगे, फर्स्ट वाले में तो एक ही डैश है, साइड में तो कुछ डैश नहीं है, सो इट विल एंड हियर ओनली। सेकेंड वाले स्केलेटन में जाओगे तो पहला स्टार बनाएगा, फिर देखेगा यहाँ स्पेस है, दूसरा स्टार, फिर देखेगा यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, देन इट विल एंड हियर। फिर तीसरे रो में जाएगा, देखेगा ओके पहला स्टार, यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग है क्या? नहीं, यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो दूसरा स्टार। फिर साइड वाला जगह में देखेगा एम्प्टी स्ट्रिंग है, नहीं, तीसरा स्टार। उसके बाद देखेगा एम्प्टी स्ट्रिंग है क्या? हाँ, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो क्लोज इट। देन मूव टू द लास्ट रो, बिकॉज आपने रेंज दिया हुआ है 1 to 5, इसीलिए। अब यहाँ जाएगा, लिखेगा एम्प्टी स्ट्रिंग, आई मीन सॉरी, वन डैश, हाँ चलो स्टार, सेकेंड में डैश है स्टार, थर्ड में डैश, ओके, फोर्थ में डैश, फिफ्थ में कुछ है क्या डैश? नहीं, डैश नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इट वोंट प्रिंट देयर, इट इज लाइक दैट। ठीक, दैट्स द थिंग, सेम लाइन इट गोes like it, like this। ठीक है, अगर सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे मैं गलती किया था स्टार्टिंग में इस तरीके से, और आपने यहाँ एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं दिया, वो क्या करेगा पता है? यहाँ स्टार देगा, ठीक है, साइड में कुछ देखेगा नहीं, फिर यहाँ स्टार दे देगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए। फिर यहाँ स्टार दे देगा, फिर यहाँ स्टार देगा, क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला है, इस स्केलेटन के अंदर फॉर द रेंज प्रिंट स्टार, बस वो स्टार प्रिंट आउट करेगा, वो एंड कहीं होगा ही नहीं, वो कहीं ना कहीं उसको आपको एंड करना पड़ेगा ना। इट इज लाइक दैट, मतलब जितने डैश है उन उतने डैश के बाद जहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा वहां आप एंड करो। ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन। ठीक, दैट्स द थिंग। और उसके बाद लास्ट में यू हैव टू राइट प्रिंट, दैट्स इट। वंस यू राइट प्रिंट, न्यू लाइन में आपको प्रिंट लिखना है। ठीक है, न्यू लाइन इनसाइड दिस लूप, आई मीन टू से मैं पहले से लिख देता हूँ, फॉर ए in range 1 to 5, यहाँ पे स्केलेटन बन गया फॉर बी इन रेंज ऑफ ए। फिर यहाँ पे यू हैव टू प्रिंट स्टार which will end in an empty string, then print। ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स विल गो ऑन। ठीक, पहले स्केलेटन क्रिएट होगा विद अ रेंज, स्केलेटन क्रिएट होने के बाद आपको बोलना है कि इस स्केलेटन के अंदर मुझे स्टार प्रिंट आउट करना है
विच विल बी एंडिंग इन अ एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग में एंड नहीं करोगे तो वो एक एक ऐसे स्टार क्रिएट करते चले जाएगा। ठीक है, दैट इज द थिंग। क्योंकि वो देखो, वो उसके पास तो एंड नहीं है ना, लाइक पाइथन के पास क्या है, पाइथन डू नॉट हैव अ एंड राइट नाउ, इफ यू डोंट राइट एंड, आई मीन टू से, अगर आप एंड नहीं लिखोगे पाइथन को समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे एंड करना है। इट विल जस्ट प्रिंट अ स्टार हियर और फिर नेक्स्ट रो, प्रिंट अ स्टार नेक्स्ट रो, इट इज लाइक दैट। अगर आप बोलोगे कि मुझे एंड करना है इन द एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ दिस स्केलेटन, दिस रेंज, तो वो साइड बाय साइड जाएगा क्योंकि वो साइड में डैश है, बट आपने कुछ बोला नहीं उसको कि मेरे को जहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है वहीं तक जाओ, इट वोंट गो, तो इट इज लाइक दैट, राइट, दैट्स द थिंग। आई होप यू गेट इट। आई होप यू गेट द थिंग। ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए रहता है ये वाला, मेनली मेनली फॉर लॉजिक बिल्डिंग रहता है ये सब। तो आई होप आपको आइडिया होगा कि अब क्या हो रहा है इन द बैक एंड, एंड क्यों हम लोग पहले एक रेंज लिखते हैं। ठीक है, वाई वी राइट अ रेंज इन फर्स्ट टू क्रिएट अ skeleton, एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ skeleton वाई वी टेल कि इसी skeleton में मुझको ये सारे चीज़ें फिलअप करना है, दैट्स इट, दैट इज द थिंग, दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन। मतलब कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, यू आर लर्निंग दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि आप सामने जो भी टूल्स हो जैसे पाइथन या तो सीक्वल या तो पावर बीआई, जो भी टूल्स हो उसको आप समझा सको कि आपको क्या चाहिए, दैट्स द थिंग। ठीक है, और कोई भी टूल्स है उसको आपको काम करवाना है, आप लाइक आप चाहते हो कि वो आपके लिए काम करे, ये वाला टूल, एनीथिंग, सीक्वल, पाइथन, सी, जावा, एक्स वाई जेड, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उस टूल को समझाना पड़ेगा कि मुझे इस तरीके से करके दो। अब ये समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा, और आप उसका लैंग्वेज समझ लिए तो आप इजीली उसको समझा पाओगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसको बताओ वो करके देगा, दैट्स इट, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, सिंपल, दैट्स द थिंग। ओके, ट्रायंगल ही बना दीजिए। थैंक्स भैया, या वेलकम भाई, वेलकम। तो चलो, लेट्स क्लोज द लाइव स्ट्रीम हियर। इट इज़ लाइक अराउंड कितना हुआ है, 10:40 हो गया, राइट, 10:45 आई मीन टू से। तो लेट्स क्लोज द लाइव स्ट्रीम हियर, लेट्स मीट टुमारो अगेन इन द न्यू लाइव स्ट्रीम। 5 दिन, कितना, 6 दिन और बचा है फॉर दिस न्यू ईयर। मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ नया सीखो न्यू ईयर में और उसको कंटिन्यू करो, आई मीन कुछ नया सीखो इन द लास्ट 5-6 डेज और उसको कंटिन्यू करो लर्निंग विद द न्यू ईयर। ऐसा मत बोलना कि न्यू ईयर आएगा तब पढ़ूंगा, अभी से स्टार्ट करो पढ़ना ताकि न्यू ईयर में वो फ्लो रहे और आप कंटिन्यू कर सको। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू डू। क्योंकि अगर आप अभी पढ़ोगे नहीं, सोचोगे यार 6 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर आएगा मंडे, फिर लगेगा यार अब मन नहीं है पढ़ने का, लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो इट इज बेटर कि अभी से पढ़ाना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी से मतलब फ्रॉम टुडे और फ्रॉम टुमारो कंटिन्यू द पेस एंड देन एंटर टू 2026। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, स्टार्ट समथिंग एट 2025 एंड कंटिन्यू with the same pace and enter 2026, that's it, simple। ठीक है,
That's the thing. So okay, let's meet tomorrow again in the new live stream. Till then, bye bye. Take care. Happy coding, happy learning, happy querying, and good night. Good night, everyone. And thank you, everyone, for joining my live stream.